Hello, dear friends, how are you? After the completion of the first important chapter, the crop production and the management, once again we are presenting here one more chapter related with the biology, and that chapter number 2 is microorganisms, friends and foe. Friends and foe. Yes, we have to take the review of these microorganisms, what microorganisms are, how they are our friends. Really, do we consider microbes as friend? And how they are non-friend, how they are harmful to us. In this particular chapter we are going to learn about all these aspects. In this, you might have seen during this rainy season nowadays that if you keep your bread or chapati or roti or any food stuff open and keep it for 1 or 2 or 3 days, you often see some patches of green or bluish or dark black color growing on this stale food. If you observe these under a microscope, you will see that they are look like this. That within our bread they have sent some root-like structure called rhizoids, and now they are growing some lateral branches. They are called hyphae, and they are producing some erect branches at the tip, which becomes darken or blacken after some period of time, and they produce very minute spores. So this is very common things that we observe this thing as a patch of thousands of microorganisms together. But why they are called microorganism? That's what we have to understand. Okay. So what we have to do? We have to collect some moist soil from the field, and in a beaker, you have to add little water and water in it. After some soil particles have settled, you observe the drop of water from the beaker under the microscope, and you will observe some interesting movement in it. Or take a few drops of pond water, then spread it on a glass slide and observe through microscope. If you do these activities with the help of your cellular phone also, which camera can also be used to magnify the images of the pond water. Of course, for that purpose you need a slide and cover slip, but if you don't have, don't worry. If you're having a plastic sheet, a thin transparent plastic sheet, that could be used as a slide and cover slip, and you can perform this experiment using your microphone, your cellular phone, its camera as a magnifying glass. Do you know how curd is from the milk? In our home, usually our mother is responsible for doing all these things, but what happens within that milk, that it curdle and it is producing a different smell and odor and taste? Who is responsible for these changes? You would have also observed, if you are preparing or making bread at home, or even sometime cake at home, your mother is adding some yeast granules while making the dough. So what is that yeast granule and what is its role in making the dough, making the bread? Okay, you often fall ill or sick due to some reasons, and you get fever. Doctor says that you are infected with some microorganisms. So what are these microorganisms? Where do they come from? If you find answers of all these questions, you will come to know very interesting fact. Before we go further, I would like to show you that what do you observe under the microscope if we collect a drop of pond water, or if you collect some samples from the spoiled food and observe under a microscope. Very interesting features that you can observe is this. Okay, please just keep yourself watching this very wonderful video for a minute, 1 or 2. See, this is a planaria. Okay, it is moving, and along with this planaria you can see here is a volvox here. These are the colonies of volvox. It is a very microscopic algae. This is a planaria and this is the volvox. It is a drop of water that we have collected. This is volvox. Okay, one by one in this slide of or video of 1 or 2 minutes you will see hundreds of different microorganisms. Okay, see, this is volvox. Here there are the cells. This is 1 millimeter ruler. This is from one here to here, just 1 millimeter. You can see that 20 of the sections are there, and you can see this very fine microorganism. Here it is amoeba.
Can you observe? It is amoeba. Yes. And this average size that we are observing is 250 to 750 micrometers. This is also one amoeba. Okay. Now see, this is more magnified. It is 100 times magnified than that app. Okay. Here you can see the paramecium, the slipper shape animal. It shows clear cut movement with the help of its fine cilia. Amoeba, you can see here. Okay. Then euglena is here. This one, euglena. Yes, it is unicellular form of living organism. As you can see that it is moving here and there. It is amoeba. As you can see, the pseudopodia are being produced by that, and these are the euglena, unicellular form of organism. Okay. This is amoeba, enlarged too much time, 400 times. It is magnified 400 times. Now you can see euglena more clearly. They are having some green pigments in them. Okay. So this is the euglena, and these are the all are human blood cells, RBCs. As you can see, as compared to RBC, how euglena is clear cut, bigger than that RBCs. Okay, and it shows a movement. Isn't it interesting? So if you take a drop of blood or drop of any water collected from the pond, of course that pond should not be fresh, then you will see. Then here, if in terms of RBCs, you can see that these are the bacteria, Escherichia coli. These are just 2 micrometers, and this magnification is 1000 bigger. Okay, so this is what, if you observe the microorganism under microscope, you will come to know very interesting features of that, and that's what we have to study about, what is microorganism and what is their role they play. Isn't it interesting? We can also prepare these types of slide in our laboratory by collecting these types of things and so. Now let me go to inquire that what are microorganisms. Micro means very small, organism the living things. Beyond our eyes, there is a very great word of some of the organism which follow all the characteristic picture of living, that they reproduce, they grow, they respire, they are having metabolism, isn't it? They show responses to the stimulus. As in this slide just now you have seen that these microorganisms are moving here and there, isn't it? Amoeba is moving toward the food, so that is we called as responses given to the stimulus. That these all are the characteristic picture of living organisms. So these are living, but they are beyond our vision because our eyes cannot see the particles smaller than 50 to 60 micron on average. और 1 माइक्रोन कितना है? 1 मिलियंथ ऑफ मीटर. 1 मीटर का 1 मिलियन मतलब 1/10 लाख टाइम जो आएगा, दैट इज 1 माइक्रोन. और हमारा आई, हमारे जो आईज है वो 50 से 60 माइक्रोन की चीज देख सकते हैं, दूर तक देख सकते हैं हम. लेकिन छोटी सी छोटी चीज हम कौन सी देख सकते हैं? तो 50 से 60 माइक्रोन यूजुअली जो चीजें होती है वो हम देख सकते हैं. उससे छोटे जो है उनको कहते हैं हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. These can be seen only under a microscope, only with the help of the instrument that we have developed during the 17th or 16th century. And Anton von Leeuwenhoek, Robert Hooke, these are the scientists given credit to find out these types of microscope. And in 1920s, then we have developed electron microscope, and with the help of this various types of microscope, now we can observe the microorganism. Sometimes if microbes like fungi, they grow on the food, like penicillium, like mucor, like rhizopus, we can observe under simple glass, but we cannot see the details of it. But anyhow, we can see them with our naked eyes also. But microorganisms are those which cannot be seen with the naked eyes. They can be observed under microscope only. Now, what are the different types of microorganism? Basically, in our book, there are explained 4 types of microorganism, but I add one virus because I consider virus is also living organism. We are going to discuss. And actually we are going through the pandemic era of the coronavirus, and this is the reason that you are at home and at my home, and we are learning on this online way. We are trying to know about coronavirus also. Okay, so these are the major groups of microorganisms. They are called viruses, bacteria, fungi, protozoa, and algae. Usually this sequence is on the basis of their sizes. Most of the smallest entity on this or that way is said to be living is a virus, then bacteria, the fungi, protozoa, and algae. Here you can see there are certain diagram. Here these are the viruses. Okay, here
This is a protozoa, like amoeba, like paramecium. As you can see here, these are the organisms which don't have cell wall, and therefore they are considered primitive animals. But this malarial parasite causes malaria. Then here it is a unicellular algae called Chlamydomonas. It is a filamentous form of algae that we call Spirogyra. Single thread of Spirogyra is microscopic. It could be observed under electron microscope only. Here it is a fungus, bread mold. It is a penicillium. It is a aspergillus. So various forms of microorganisms, they are there. And these are the two slides showing the bacteria. Okay, so these are various types of microorganism. Let me talk about characteristic picture of each one. The first one is viruses. Here in this diagram, friends, you can see is a T2 virus. What is this virus? T2, or it is called as bacteriophage. The virus that infect the bacteria, and it is having the head region where there is one nucleic acid. You can see this is the middle part, this is the basic part, and these are the tail fibers with the help of which attaches to the bacteria and infect the bacteria also. Isn't it interesting? So viruses even can infect the bacteria. Viruses are very microscopic, but they are not considered being living, because some of the characters of the viruses shows that they are non-living and some of them showing that they are living. When they are outside the body of living organism or their host, they are almost particle, they are said to be non-living. But as soon as they enter in the cells of the host organism, in fact, then they start living, or they shows characteristic picture of living. And almost all the viruses are obligate parasites. Essentially they are parasites and they are pathogenic, और वो डिसीज भी बनाते हैं, और इसेंशियली वो दूसरे सजीवों के शरीर में रहती है, इसलिए हम उसको कहा ऑब्लिगेट, कंपल्सरी पैरासाइट. They are considered at the borderline case between the living and non-living. A virus behaves as non-living when it is outside of the host cell. That is, virus does not carry any process of living, that nutrition, उसको खाना नहीं लेता, वो रेस्पिरेशन वो करता नहीं, उसके साइटोप्लाज्म होता नहीं, उसका सेल वॉल होता नहीं, बराबर है, और वो रिप्रोडक्शन भी नहीं करता आउटसाइड ऑफ द सेल, खुद का मेटाबॉलिज्म नहीं, खुद के एंजाइम्स नहीं, नथिंग. बट वंस इट एंटर इनसाइड द होस्ट, it capture the metabolic machinery of the cell of the host by penetrating its nucleic acid. उसके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड है, या तो डीएनए या तो आरएनए, जो भी है. ये वायरस उस सेल के अंदर जाके अपने डीएनए से वो सेल के मशीनरी को डायरेक्ट करता है क्या करना है, और अपने जैसे खुद हजारों करोड़ों पार्टिकल्स वो बनाता है, और जैसे ही वो अंदर जाएगा तो खुद न्यूट्रिशन भी करेगा और रिप्रोडक्शन भी करेगा व्हेन इनसाइड द होस्ट सेल. They, however, reproduce only inside the cells of the host organism, which may be a bacterium, plant, or animal, and accordingly, these viruses are classified as bacteriophages, माने bacterial viruses, phyto माने plant, phytophages माने plant को disease करने वाले viruses, और zoophagous मतलब animal को और हमें disease निर्माण करने वाले, जैसे कि HIV वायरस है जो हमें इन्फेक्ट करता है, टोबैको मोजाइक वायरस TMV जिसको कहते हैं वो प्लांट को इन्फेक्ट करता है, T2 वायरस, ये जो वायरस है इसको कहते हैं हम टैडपोल लाइक वायरस, और बहुत से अलग अलग तरह के वायरसेस हमें आगे भी देखना है. अब एक देख सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है वायरस का. यूजुअली आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये बहुत ही टिपिकल वायरस है जो कोरोना वायरस है. आप देख सकते हैं जामुनी कलर का जो कोट दिखा है, इट इज ए डायग्राम, एक तरह का ये प्रोटीन का कोट है, प्रोटीन, इसको कहते हैं हम कैप्सीड, विच इज मेड अप ऑफ कैप्सोमर. देखो ये छोटे छोटे जो है वो कैप्सोमर, ऐसे हजारों कैप्सोमर से बन गया ये प्रोटीन का कोट, और उस प्रोटीन कोट के अंदर होता है एक न्यूक्लिक एसिड कोर. उसके अंदर या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, दोनों नहीं होते. वायरस से छोड़ के दुनिया के सारे सजीवों की खासियत यह है कि उनमें दोनों न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए एंड आरएनए. बैक्टीरिया से लेकर टॉप मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात हम करते तो उनके अंदर डीएनए आरएनए दोनों होते हैं, इसमें एक ही होता है, या तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, ये भी उसकी खासियत. और कुछ वायरसेस के बाजू में फिर उसके बाहर एक एनवलप होता है. एनवलप मतलब प्रोटीन कोट का बाहर कोट. जैसे प्लांट सेल में हमने देखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल और उसके बाद में एनवलप होता है, ऐसे वायरस के बाजू में एक एनवलप होता है, और उस एनवलप के ऊपर आपको दिख रहे हैं कुछ स्पाइक्स होते हैं, और इसी स्पाइक के वजह से उसको हम कहते हैं कोरोना वायरसेस. द कोरोना वायरसेस आर द ग्रुप ऑफ वायरसेस विच आर हैविंग द स्ट्रक्चर लाइक दिस, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लू
ओके, सर्दी पड़सा खांसी जिसको हम कहते हैं, इस तरह के डिसीज जो हमें सर्दी खांसी बनाते हैं वो सारे कोरोना वायरस के ही अवतार है, अलग अलग प्रजातियां है। तो ये उसका टिपिकल स्ट्रक्चर है कि उसका आउटर मोस्ट कैप्सिड होता है जो प्रोटीन से बना हुआ है, उसके अंदर, ये कैप्सिड के अंदर एक न्यूक्लिक एसिड होता है, एंड इट इज कवर्ड बाय ए एनवलप, और उसके ऊपर पेग्स होते हैं, कांटे के जैसे, स्पाइक के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए उसको हम कोरोना वायरस बोलते हैं। ओके, उसके अंदर या तो एक डीएनए होता है या आरएनए होता है। मैंने यहाँ पर कुछ वायरसेस आपको दिखाए, ये आप देख रहे हैं कि फ्लू का वायरस है, उसके बाजू में एक प्रोटीन कोट है और उसके ऊपर भी पेग्स है, अंदर उसके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड है। हर्पीस वायरस जो नागिन नाम का डिसीज बनाता है वो वायरस है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में एड्स का वायरस ऐसे दिखेगा, पोलियो का वायरस ऐसे दिखेगा, और रैबीज जो हमें हाइड्रोफोबिया, कुत्ते के काटने से होता है, उस तरह का वायरस ये ऐसे दिखेगा। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनिमल वायरसेस और ह्यूमन वायरसेस पर्टिकुलरली हम कहेंगे। और ह्यूमन वायरस की खासियत ये है कि उन सारों में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो यूजुअली आरएनए होता है, और इसीलिए ये आरएनए पोजेसिंग वायरसेस दुनिया के सबसे डेंजरस वायरसेस माने जाते हैं। दे आर हैविंग न्यूक्लिक एसिड आरएनए, इसलिए उनको रेट्रोवायरस भी बोलते हैं, और रेट्रोवायरस सबसे ज़्यादा डेंजरस डिसीजेस बनाते हैं। हमारा जो कोरोना वायरस है वो इसी ग्रुप में आता है, रेट्रोवायरस के अंदर, और उसका स्ट्रक्चर यूजुअली ऐसा है, और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको मालूम है वो कॉन्टैजियस है, मतलब टच से स्प्रेड होता है। और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में होने की वजह से हम जब स्नीजिंग करते हैं, या हम कफिंग करते हैं, या सलाइवेशन करते हैं, या नाक में से कोई हम म्यूकस निकालते हैं, तो वो फ्लूइड को वो चिपका रहेगा, तो हमारे हाथ को लगेगा, हमारे जहाँ जहाँ जो चिचू लगेंगे उसको वो इन्फेक्टेड करते रहेगा, और वो चीज़ अगर दूसरे ने छू ली तो उसके हाथ पे चला जाएगा। सो दैट इज वी कॉल्ड एज अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एंड इट इज कॉन्टैक्ट, and therefore you know that what are the parts which are making contact directly of your hands, and therefore it is suggested that you should wash your hands with the help of soap, क्योंकि सोप क्या करता है, ये जो बाहर का फैटी लेयर है, ये फैटी लेयर को डिसॉल्व कर देता है, लेकिन उसके लिए कुछ सेकंड, 30-40 सेकंड हमको देने पड़ेंगे, या अल्कोहल जैसे कुछ चीज़ें ये डिसॉल्व कर देते लिपिड लेयर को, और वो उस वायरस को ख़त्म कर देते। दैट्स व्हाट वी आर बीइंग सजेस्टेड, हाउ टू प्रिवेंट यूर सेल्फ फ्रॉम कोरोना वायरस, दैट यू हैव टू कीप अवे फ्रॉम यूर सेल्फ फ्रॉम द कॉन्टेजियस पार्ट्स। जो डिसीजफुल लोग हैं उनसे दूर रहेंगे, मुख पे हमारे मुख फट्टी लगेंगे, क्योंकि किसने स्नीज कर दिया और उसके स्नीजिंग में वायरस रहे तो वो हमें आ जाएंगे। और हम हाथ को बार बार धोना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं हम बाहर गए तो कहाँ हमने छू लिया, अगर वहाँ पर वो वायरस होगा तो हमें भी आएगा। सो दिस इज वंडरफुल एस्पेक्ट्स ऑफ द वायरस। यहाँ पर मैंने कुछ ह्यूमन के डिसीज दिए आपके सामने, और कुछ वायरस के नाम दिए, सारे वायरस के नाम मैंने नहीं दिए, ताकि अननेसेसरली यू शुड नॉट बॉदर्ड अबाउट। आपको मालूम है कि पोलियो है, फ्लू है, एड्स है, कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मिजल, कोरोना और हर्पीस, ये सारे पहचान वाले नाम आपके हैं। स्मॉल पॉक्स को हम देवी का रोग कहते हैं, चिकन पॉक्स को हम कांजड़िया बोलते हैं, मिजल को हम और क्या बोलते हैं, मम्स नाम का एक है। ये सारे आपने इसके लिए वैक्सीन भी लिए, ये सारे ह्यूमन को डिसीज करने वाले वायरसेस। फिर प्लांट्स और एनिमल के वायरस की बात करेंगे तो हम देखेंगे टोबैको मोजाइक वायरस है, जो टोबैको मोजाइक वायरस से बनाता है डिसीज। येलो मोजाइक ऑफ द भिंडी, येलो टोमेटो, येलो लीफ कर्ल, कुकुम्बर मोजाइक, मतलब ककड़ी को, टोमेटो को, भिंडी को, हमारे सारे क्रॉप प्लांट को ये डिसीज बनाते हैं वायरसेस। उसी तरह से कैटल को होने वाला फुट एंड माउथ डिसीज, मुंह को खुरी आना कहते हैं उसको। देन क्लासिकल स्वाइन फीवर जो पिग्स को होता है। फिर हमारे मुर्गियों को होने वाला, चिकन को होने वाला है, अचानक रात में होके मुर्गियाँ हज़ारों मर जाती है, उसको रानीखेत कहते हैं। देन एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड्स को होने वाला फ्लू हमारे जैसा। देन कोई हर्पीस वायरस इन एक्वाकल्चर जो फिशेज को होता है, और कुत्तों में जो होता है और बिल्लियों में जो होता है वो डिस्टेम्पर जो कहते हैं। ऑल दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरल डिसीजेस। After viral diseases, or what, after understanding the viruses, we have to talk about bacteria. Yes, this is also another group of microorganisms which are very cosmopolitan and literally occurs everywhere on this earth. It is present in air, in the soil, in the water. It is present on the body of your surface. It is present within your body. It is present in the plants, in the animals, in the everywhere the bacteria are there. Okay, their occurrence is everywhere. Okay, and these are also microscopic. If you observe them under microscope, they appears in the different forms. Their structure is very typical. As you can see here, they are circular. If they are
single celled, or if they are two together, then they are called diplococcus. Then if they are in the chain, they are called streptococcus. If they are in the group, then they are called staphylococcus. All these types of cocci, okay, spherical shapes of bacteria, they are present on our skin, within our body very commonly. You know that nowadays when you are becoming adolescent and you are getting the pimples, in this pimples streptococcus and staphylococcus bacteria grow openly, causing you acne. Then there are certain rod shaped bacteria, they are elongated comparatively, they are spare circular, और ये लंबे लंबे होंगे, ओके, उनको कहते हैं हम स्ट्रेप्टोबैसिलाई वगैरह वगैरह। तो ये लंबे लंबे होते हैं। जो लैक्टोबैसिलस है, दूध को दही बनाने वाला, वो लैक्टोबैसिलस है। कुछ कॉमा शेप्ड है, कर्व शेप है, और कुछ अलग अलग फॉर्म है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो कोरिनो बैक्टीरिया होता है, जो हमारे दही में दूध में होता है, ये हेलिको बैक्टीरिया, हेलिकल शेप का उसका आकार होता है। और कुछ लंबे लंबे फिलामेंटस होते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो ये अलग अलग तरह के बैक्टीरिया है, उसके आकार के मुताबिक। ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप द बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड एज कोकाई, बैसिलाई, देन स्पिरिलम, and then they are curve shaped forms of bacteria. These bacteria, some of the bacteria are autotrophic. Yes, they perform photosynthesis and they prepare their own food material like green sulfur bacteria. But all bacteria are not autotrophic. Most of the bacteria are heterotrophic. They mean they cannot synthesize their own food material, and therefore they are heterotrophic. But in this heterotrophic form also there are certain pathogenic. What does it mean? Pathogenic का मतलब क्या है? When the microorganism bacteria causes certain diseases, they are called pathogens. There are certain parasitic like E. coli. They live in our body. Actually, they are helping us in digestion of the milk, but they do not cause any harm to us. Therefore, they are called parasitic. And some of them are saprophytic. They mean they are growing on dead and decaying organic matter of the plants and animal origin, and thereby degrading them. So they are said to be saprophytic. So heterotrophic forms of bacteria may be pathogenic, disease causing, parasitic, living in the body of other living organism, or saprophytic, growing on the dead and decaying matter. They are useful sometime and they are harmful. We are going to discuss all the things in details in latter classes. And what are the different types of bacteria? Here I have just given the example. Rhizobium, it is a bacterium. It is like a rod-shaped bacterium. It occurs usually in the root nodules of leguminous plant, helping the nitrogen fixation. E. coli, Escherichia coli, is a coliform bacterium that occurs in our intestinal canal. Then Pseudomonas, then Streptococcus. These all are the different forms of bacteria. At least you should know them, their names, why they are so called. Then let me go for another group of microorganisms. They are called algae. Algae actually are photosynthetic organisms. They are aquatic. Essentially all the algae are green and they are very simple in their organization, and they are said to be the most primitive in the group of plants. They do not have roots, stem and leaves. Some larger algae we know. Okay, vulva, chara, we know them. But there are certain microscopic forms of algae. Sometimes they are unicellular, sometimes they are forming the colonies, as you can see here. There are cryptomonas, then there are chlamydomonas, as you can see, it is a unicellular form of algae. Then there are certain volvox, here you can see euglena is just also considered in algae. So here chlorella, yeah, chlorella is also unicellular algae, perform photosynthesis. Okay, so they are very simple form of living organism. They are photosynthetic, unicellular or microscopic organisms, and they contain cell wall because they belonging to the plant group. They contain chloroplast with the help of which they perform photosynthesis, and they are said to be autotrophic. Example, Oocystis, Chlamydomonas you can see, then Spirogyra that you would have seen the name of it, and then Chlorella as I have shown you. So these are also some of the algae. Actually, a few form of algae are recorded to be causing certain diseases, but very few. But most of the algae are useful to us because they are photosynthetic and so. There is another group. Can you observe and can you tell me what is this? You can see here mandarin, संतरा है यहाँ पर, और संतरे के ऊपर जो पीले कलर का डस्ट फॉर्म हुआ, उसको जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको वो ब्रश के जैसा दिखेगा. इट इज़ अ पेनिसिलियम. आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कैंडिडा नाम का फंगस है. ये जो फंगस है वो है यूनिसेल्युलर ईस्ट है, और ये जो फंगस है आप देख रहे हो उसका स्पोरेंजियम है, उसके लंबे लंबे हाइफी है, और ये स्पोरेंजियम में बहुत ही माइक्रोस्कोपिक काले कलर के स्पोर्स होते हैं, और ये म्यूकर है, म्यूकर, जिसको हम ब्रेड के ऊपर ग्रो होते हुए हमारे घर में देख सकते हैं. सो दीज आर द फंजाई. या आपने मशरूम को देखा होगा,
तो मशरूम तो बहुत बड़ा फंगस है जो हमें आंखों से दिखता है. बट देयर आर 100 फॉर्म्स ऑफ फंजाई विच आर वेरी फाइन माइक्रोस्कोपिक एंड दे कुड बी ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप ओनली. लेकिन फंजाई भी प्लांट के जैसे सेल वॉल वाले होते हैं, उनके सेल में सेल वॉल होता है, लेकिन उनका सेल वॉल काइटिन से बना होता है. उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, तो वो हेटेरोट्रॉपिक फॉर्म्स है, मतलब दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल. बट उनमें से कुछ फॉर्म्स होते हैं सैप्रोफिटिक. सैप्रोफिटिक का मतलब क्या? दे आर ग्रोइंग ऑन डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन, है ना, सड़ा हुआ गला हुआ, है ना, जो चीज़ है उसके ऊपर ग्रो होने वाले सैप्रोफिट्स होते हैं. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट काम वो करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को साफ करने का काम वो करते हैं, पूरा गला कचरा पूरी तरह से फिर से इनऑर्गेनिक कंटेंट में रूपांतरित करने का काम वो करते हैं. सभी फंजाई माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एक्सेप्ट मशरूम जो है वो माइक्रोस्कोपिक नहीं होते, हमें आंखों से हम दिखते हैं. वो यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है. कुछ फंजाई हमें डिसीज कॉज करते हैं, जैसे एथलेट फुट है ना, कैंडिडाइसिस बनाता है. देर आर सर्टन फंजाई विच कॉजेस डर्मेटाइसिस, हमारे स्किन के डिसीज बनाते हैं, एक्जिमा है ना. तो ऐसे कुछ डिसीज बनाते हैं. लेकिन कुछ फंजाई हमारे बहुत काम के हैं, जैसे कि ईस्ट है, जिससे फर्मेंटेशन से हम अल्कोहल बनाते हैं. ईस्ट से हम ब्रेड बनाते हैं. पेनिसिलियम से हम एंटीबायोटिक बनाते हैं. एस्परजिलस नाइगर से और कुछ चीज़ बनाते हैं. अलगी के बाद में और एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उसके बारे में हमको जानना जरूरी है. आप देख सकते हैं कि ये यूग्लिना है, ये पैरामेशियम है और ये अमीबा है. ये प्लाज्मोडियम नाम का वो सजीव है, प्रोटोजुआ है, कि अमीबा के भाई है वो, उसका भी कोई सेल वॉल नहीं होता, पर यही वो प्लाज्मोडियम है जो हमें मलेरिया कॉज करता है और मॉस्किटो के द्वारा हमारे शरीर में लाया जाता है, मॉस्किटो एक्ट एज ए वेक्टर. तो ये सारे जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, आप देख रहे हैं कि उनके बाजू में कोई सेल वॉल नहीं होती, लेकिन वो यूनिसेल्युलर फॉर्म्स है, लेकिन हमें आंखों से दिखते नहीं. अगर हम ड्रॉप ऑफ वाटर लेते हैं तो वी कैन ऑब्जर्व, अभी मैंने आपको स्लाइड में दिखाया, रिकॉर्ड में दिखाया कि एक तरह का ये अमीबा किस तरह से सुडोपुडिया बना के मूवमेंट दिखाता है. इसके ऊपर सीलिया होती है जिसकी वजह से वो मूवमेंट करता है, और इसके ऊपर बड़ा सा फ्लैजेलम होता है और इस तरह से वो मूवमेंट करता है. आप प्लाज्मोडियम भी देख सकते हैं, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आप देख सकते हैं उसका एक फ्लैजेला है. और इस तरह से ये जो माइक्रोब्स है इनको कहते हैं हम प्रोटोजोआ. दे डू नॉट हैव एनी सेल वॉल, दे डू नॉट हैव एनी क्लोरोप्लास्ट एंड दे डू हैव सेल न्यूक्लियस. उसके अंदर न्यूक्लियस है, इनके अंदर खुद का न्यूक्लियस है, मतलब वो यूनिसेल्युलर है, लेकिन उनका क्लोरोप्लास्ट न होने की वजह से दे आर हेटेरोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. दे आर कंसिडर्ड एज सिंपलेस्ट एनिमल्स. ओके, एग्जाम्पल अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, जो हमें मलेरिया कॉज करता है. अब ये माइक्रोब्स कहाँ होते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे. हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एक्चुअली आई टोल्ड इन द बिगिनिंग ओनली दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ, इन द लैंड, in the water and in the air. They were found inside the body of animals, outside the body of animals. Some of the microbes are even found in extremely harsh condition like crater of the volcano, जहाँ पर तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस उसके आजू बाजू देखा जाता है. सल्फर स्प्रिंग में देखा जाता है. उसके बाद में आइस कोल्ड क्लाइमेट में, या हॉट स्प्रिंग डेजर्ट में, मार्शी एरियाज में जहाँ पर सलाइन साइल हो, बहुत ज़्यादा साल्टी सॉइल होती है, वहाँ पर भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं. मतलब बैक्टीरिया इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि दुनिया के सारे अलग अलग एरियाज में, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में वो जी सकते हैं, वो इनकी कैपेसिटी है. दिस इज द रीजन दैट द वेरी डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, अब ये जो माइक्रोब्स के हमने टाइप्स देखे, उसमें के कुछ यूजफुल होते हैं, उसमें के कुछ हार्मफुल होते हैं. अब जो हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमें इनडायरेक्टली मदद करते, नेचुरली बायोलॉजिकली, वो पहले से हमें मदद करते थे, हमें पता नहीं था. जैसे लैक्टोबैसिलस है, दूध का दही बनता था, लेकिन हमें मालूम नहीं कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस इज अ बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वंडरफुल चेंज, जिसकी वजह से हमारे दूध के अंदर दही बनने में जो लैक्टिक एसिड बनता है, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है, उसके अंदर कुछ विटामिन बढ़ जाते हैं. तो ये हमें पता नहीं था. वैसे हंड्रेड्स ऑफ थिंग जो हमारे घर में फर्मेंटेशन द्वारा हम बनाते हैं, जैसे इडली है, डोसा है, तो ये सारे फर्मेंटेशन करने वाले माइक्रोब्स ही होते हैं. उसके बारे में अभी हमको मालूम नहीं. अभी हम देखेंगे कि इस माइक्रोब का हम कमर्शियल यूज कैसे करते हैं, मतलब बड़े पैमाने पे वो हम कैसे कमर्शियली, मतलब उसका व्यापार करने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं. ओके, आपने देखा होगा कि हमारी मम्मी क्या करती है, जब दूध का दही बनाती है तो एक चमचा भर दही पहले से बना हुआ दही उसके अंदर डालती है. उसको स्टार्टर कल्चर करते हैं बायोलॉजी में. ओके, इट्स कॉल्ड स्टार्टर कल्चर, या हिंदी में उसको जमावन कहते हैं, और मराठी में उसको क्या बोलते हैं उसको मराठी में. ओके,
तो वो हम चमचा भर उसके अंदर डालते हैं. व्हाई? बिकॉज दैट स्पूनफुल ऑफ स्टार्टर कल्चर, थाउजेंड्स ऑफ लैक्टोबैसिलस आर ऑलरेडी देयर. और जब हम दूध को थोड़ा गर्म करते हैं और उसके अंदर चमचा भर दही डालते हैं, तो उस वार्म दूध के अंदर वो चमचा भर दही के अंदर के जो लैक्टोबैसिल है वो रैपिडली डेवलप होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं. मल्टीप्लाई होने के बाद में वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं. वो लैक्टिक एसिड हमारे दूध के अंदर का जो प्रोटीन है केजिन, उसका कोएगुलेशन करवाता, उसकी गुठलियाँ बनाता, थोड़ा पानी बाजू में कर लेता और उसकी गुठलियाँ बन के जो बनता वो होता है दही. आपने देखा होगा कि दही के अंदर हमको सोर टेस्ट आती है, उसका कारण उसके अंदर लैक्टिक एसिड नाम का एक एसिड बनता है. तो ये जो बैक्टीरिया है ये सब चेंजेस की मया कर लेता है कि दैट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई, पहले तो मल्टीप्लाई करता है. जैसे ही वो मल्टीप्लाई हो गया इट प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड. मतलब हमारे मिल्क में प्रोड्यूस कैसे करता है वो, तो मिल्क में एक शुगर होती है, उसका नाम है लैक्टोज, और उस लैक्टोज को रूपांतरित करता है वो लैक्टिक एसिड में. इसको कहते हैं हम फर्मेंटेशन. सो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ब्रिंग्स अबाउट फर्मेंटेशन ऑफ a sugar called lactose into lactic acid. This lactic acid now brings about curdling of the milk, coagulation of the protein. As a result, this curd is formed. That's why you see the wonder that when your mother adds a spoonful of curd to warm milk to set the curd, and what happens in it is that. Okay. उसके बाद में अपने, मैंने जैसे आपको कहा कि केक बनाते समय या ब्रेड बनाते समय भी कभी आपने आपके मम्मी को पूछा तो बोलेंगे कि आपने मार्केट में हम ईस्ट ग्रैन्यूल लाते हैं. आप ये प्रयोग घर पे भी कर सकते हैं कि ईस्ट के ग्रैन्यूल्स लाते ही उसको हमने वार्म वाटर जिसके अंदर 7% शुगर होगा, मतलब 100 मिलीलीटर वाटर लेने का, उसके अंदर 7 to 8 ग्राम शक्कर डालने की, उसको अच्छी तरह से घोल लेने का, उसको वार्म करने का 40 डिग्री सेल्सियस तक, और उसके अंदर वो 2-4 ग्रैन्यूल ईस्ट के डाल देने के, और एक 4 घंटे के बाद में 3 घंटे के बाद में आपने देखने का उसके अंदर क्या चेंजेस हुए. और एक ड्रॉप उसका लीक है हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं. अगर आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है तो आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट शीट लेना है, उसके ऊपर एक ड्रॉप डालना है वो, और एक और टुकड़ा छोटा सा काट के उसको कवर स्लिप की जैसे डालना है. और हमारे पास जो सेल्यूलर फोन है ना, उस सेल्यूलर फोन को अगर हम सेट करके देखते हैं तो यू विल सरप्राइजिंगली सी दैट व्हाट आई हैव शोन हियर. ये ईस्ट हमको दिखने लगते हैं, यूनिसेल्युलर फॉर्म ऑफ ईस्ट. ये मल्टीप्लाई होने लगते हैं, ये देखो उसका बडिंग चालू है यहाँ पर, और ये मल्टीप्लाई होते ही वो फर्मेंटेशन करवाते हैं और शुगर का रूपांतर अल्कोहल में करवाते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन. सो ईस्ट आर द यूनिसेल्युलर फॉर्म ऑफ फंजाई. दे ब्रिंग्स अबाउट सर्टेन चेंजेस इन द स्टार्च एंड शुगर ऑफ द फ्लोर. जिस फ्लोर से हम केक बनाते हैं या ब्रेड बनाते हैं उसका फर्मेंटेशन करवा के उसके अंदर थोड़ा अल्कोहल बनाते हैं और बड़े पैमाने पे CO2 बनाते हैं. अब ये जो अल्कोहल है और CO2 है, वो हमारा जो डो है, वो ब्रेड के बनाने वाला जो गुंथी हुई जो हमने गेहूं का आटा बनाया, उसमें से जब उसको हम बेकिंग करते, बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको बेक करते, तो उसके अंदर का CO2 निकल जाता, और जब CO2 निकलता तो वो ब्रेड पफी हो जाती, और हाई टेम्परेचर की वजह से उस ब्रेड के अंदर के जितने प्रोटीन है वो कोएगुलेट होके वैसे के वैसे हो जाएंगे, और फिर हमारी ब्रेड फूल जाएगी. So the puffiness of the bread is due to carbon dioxide produced during the fermentation. उसी तरह से हमारे घर में जो इडली बनता है, जो हमारे डोसा बनता है, हमारे घर में हम जलेबी बनाते हैं, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स हमारे घर में बनाते हैं, वो फर्मेंटेशन से हमारी मम्मी जब बनाती है तो उस चीज़ों में माइक्रोब्स होते हैं. तो फर्मेंटेशन अगर जूस का करते हैं, हम शुगर केन के जूस का करते हैं या सीरियल का करते हैं, तो उससे अल्कोहल भी बनाते हैं. तो इस तरह से लैक्टोबैसिलस का उपयोग कर हम दूध का दही बनाना, दही से फिर न जाने कितनी चीज़ें हम बनाते हैं. आपको मालूम है कर्ड से हम क्या क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं पनीर बनाते हैं, देन चीज़ बनाते हैं ना, योगर्ट, ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं. उसके बाद में ये लैक्टिक एसिड जो इसका अंदर बनता है वो मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होता है. बाद में अल्कोहल, आपको मालूम है बड़े पैमाने पे हम पावर अल्कोहल आजकल फ्यूल में डालते हैं. उसके बावजूद अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में भी अल्कोहल का इस्तेमाल होता है. स्टरलाइजिंग एजेंट भी अल्कोहल है. आजकल अपने कोरोना के लिए देखा होगा कि जो हैंड सैनिटाइजर है उसके अंदर 80% अल्कोहल होता है, क्योंकि अल्कोहल सारे माइक्रोब्स को मार देता है. सो इट इज़ एंटीसेप्टिक. सो दिस इज द वे दिस माइक्रोब्स आर यूज फॉर commercial production of lactic acid, curd, then alcohol. Beside that, one more interesting aspect we will see. Wine है, beer है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स है, ये सारी चीज़ें बनती. उसके बाद और एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट हमें मुझे बताना है आपको, वो है एंटीबायोटिक. और ये आप दिख रहे हैं ना मेरे बाजू में, ये है मिस्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग.
द मैन हु इज अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ द वंडर ड्रग, उस वंडर ड्रग का नाम था उस वंडर ड्रग का नाम था पेनिसिलिन. ओके, ओके. तो पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक वगैरह कैसे बनेगा, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. शायद मुझे लग रहा है कि हमारा टाइम काफ़ी हो गया है. ये पीरियड यहीं हम रुकवाएंगे. अगले पीरियड में हम आगे का कमर्शियल प्रोडक्शन देखेंगे. ओके, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट पीरियड.